Hey, welcome back again for the AutoCAD next tutorial. I'm RK and you are watching RK Engineering Tech. So guys, are you civil engineer or civil engineer student? And you have to must know about this tutorial because I'm going to discuss about most important topic. And today's topic is nothing but xline. Xline is construction line. So guys, let's start. What is it? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन है क्या, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे कि हम सर्वे करते हैं फील्ड में हम कोई भी, जैसे कि मान लो आप ये 3 कॉलम है, ठीक है। इस 3 कॉलम को हमको एक सीधी लाइन में अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करते हैं? सर्वे करके हम अरेंज करते हैं, ठीक है। बट हम ड्राइंग में जाते हैं तो ड्राइंग में हमारे पास एक कमांड है xline कंस्ट्रक्शन लाइन XL, ठीक है। और इस कमांड का एक खासियत ये है कि मतलब ये इनफाइनाइट लाइन तक होता है, इनफाइनाइट शो करता है, जो कभी इंड नहीं होता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल प्रेस इंटर, ठीक है। स्पेसिफाई पॉइंट दिस एंड दिस इज एंड दिस, ठीक है। और ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होता। मैं आपको ये लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट्स सी इसका यूज कर लेते, अरेंज कर लेते। जैसे कि हमारे पास ये 3 कॉलम बेस प्लेट है, ठीक है। 3 column base plate, this one and this one and this one, and how I arrange in the straight line, one of the straight line, and this our line, okay. To make it, erase it, okay, and press enter, and you have to this thing. So I'm going to use copy command, sorry, move command, MO, and press enter. Sorry, MOV, and press enter, ठीक है। and select object, okay, and base point, and I am taking this, okay. That's simple. Press enter, select object, and press enter, and selecting base point, and that's it. Again press enter and select object and press enter, and I am taking base point and arrange it, okay. So मैंने आपको एक चीज़ और बताते, इस तरह से आप अरेंज करके कंस्ट्रक्शन लाइन को यूज कर सकते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताया था क्या, क्योंकि ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे कि मैं एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ, ठीक है, एंड पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ वर्टिकल लाइन के लिए यहाँ पर मैंने लिया था, ठीक है। दैट्स इट। और आपको ये भी दिखा ही दूँ कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो लेट्स कैसे देखेंगे, जूम इन और जूम आउट करके। हम जूम इन करते हैं, आप देख सकते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होगा मेरे भाई। जितना भी जूम इन जूम आउट कर लो, ख़त्म नहीं होगा। तो आपने देख ही लिया। लेट्स टेक अगेन, टाइप एक्सेल फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट and make vertically arrange of this setup. Take and first arrange this lower setup, and after that you have to choose this upper object and you have to arrange in such way and in such line which I have drawn vertically. Am I right? So first take up this and arrange in such a way that, so guys, in such a way you can arrange lots of objects in a one manner, in a one pattern. So guys, thank you so much to watch video.